Hello everyone, Amit Arora from EcoVisioneer. I'm back with news this week, India and the world, and I request you again to subscribe our channel and also comment in the comment section your views about the news. This way we learn a lot of things from each other. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसमें कमेंट कीजिए अबाउट द न्यूज़ विच आई always give you and correct me if I'm wrong somewhere and also give your opinion about the news. A healthy discussion can take place in the comment section. इस हफ्ते आप सबने देखा होगा this week we had more of news regarding new education policy, national education policy. After 34 years there has been a change coming up in the education policy now. Education is going to change in India. There are few important things we'll discuss about this today. Few highlights I have in front of you. One, it says that the 10 plus 2 system is gone now. The 10 plus 2 structure of school curriculum to be replaced with 5 plus 3 plus 3 plus 4. This we'll discuss in detail after this slide. Very good decision on medium of instruction, keeping the states happy. The medium of instruction until class 5th and preferably till 8th can be and will be in mother tongue, local language or regional language. तो 3 लैंग्वेज वाला सिस्टम आ रहा है, 3 लैंग्वेज सिस्टम. So the child can learn in his mother tongue or regional language. Say we are in say Karnataka, so we can till 8th we can use the medium of instruction as Kannada, or if we are in Maharashtra we can use Marathi. For higher education we'll be having a single regulator now for all the higher education institution except for legal and medical colleges. And a very good news for students who were fed up with cutoffs and वो जो रेस थी मार्क्स की 100 मार्क्स की रेस वो ख़त्म. So we'll have a common entrance exam after 12th for the admission in universities. It will be conducted by national testing agencies. मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस मिलेंगी डिग्री कोर्सेज में स्टूडेंट्स. मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 2 साल बाद वो कोर्स छोड़ दिया है एंड स्टिल आई विल गेट अ डिप्लोमा इन दिस कोर्स एंड थर्ड ईयर आई विल गेट अ डिग्री इफ आई लीव एंड फिर रिसर्च के लिए 4th ईयर होगा तो 4 साल की डिग्री. अभी इसके ऊपर भी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो फर्दर. लेट अस स्टार्ट द स्कूल के रिफॉर्म्स क्या आए हैं हमारे. स्कूलिंग रिफॉर्म मेन द ट्रांसफॉर्मिंग योर करिकुलर एंड pedagogical structure. Your new pedagogical and curricular structure of school education is not anymore 10 plus 2. It is 5 plus 3 plus 3 plus 4. 3 years in Anganwadi or preschool as you say and 12 years in school. So foundation stage को 5 में divide किया गया है जहाँ पे we will have पढ़ाई कराई जाएगी multi level play activity based learning, that is from 3 years before first and second, तो 5 साल activity based learning. Then we have preparatory stage which is 3rd to 5th, that will be preparatory stage जिसमें again playway method, discovery and activity based learning, interactive classroom learning. तो लर्निंग बेस्ड जो लर्न करना है बच्चे ने रट्टे मारने हैं वो कम हो रहा है, उसी लेवल से कम हो रहा है. एक्टिविटी इंटरैक्टिव बेस्ड क्लासरूम लर्निंग टिल क्लास 5th and very good experiment. अगर ये if they are able to implement it properly. The middle stage is the third stage. middle stage में हम experiential learning पे ध्यान दे रहे हैं in science, maths and arts and also यहाँ पे वोकेशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन क्लास 6th to 7th. वोकेशनल स्टडी दी जाएगी और एक लोकल वोकेशन ज़रूर सिखाया जाएगा बच्चे को उस लेवल पे, जैसे कारपेंट्री एंड अदर पॉटरी एंड अदर थिंग्स. दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर इंडिया एजुकेशन सिस्टम, बट देखें कैसे अडेप्ट किया जाता है इसको. इट्स अ गुड आइडिया इफ implemented properly. And last is secondary stage जहाँ पे हम multidisciplinary study करवाएंगे. Student having accounts as a main subject can take music as a minor subject or physics with political science can be taken. तो ऐसा कुछ so वो humanities, arts और humanities, commerce और science वाला division हट गया. एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बच्चे को, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे
और क्रिटिकल थिंकिंग पे पढ़ाई ज़्यादा होगी rather than लर्निंग एंड रोट लर्निंग को हटाया जाता है. दैट इज व्हाट चेंज वी सी इन द school system. So that is a welcome change if properly implemented. अगर हम यहाँ short में देखें सारा what is it all about. As I told you, it is 5 plus 3 plus 3 plus 4 system. It is multi-stream now, flexibility to choose subjects across teams. I can have accounts with the history. I can have all subjects to be offered to levels of proficiency. बोर्ड यहाँ तो बहुत बहुत ही कम इम्पोर्टेंस की जा रही है बोर्ड की. Although it will be offered twice a year, but it will be only focusing on core competencies. वो learn करने वाली चीज़ें नहीं होंगी. More of objective and less of subjective. Multilingual, I told you before, 3 language policy आ जाएगा इसमें. Continue the preference of local language as medium of instruction till class 8th is also applicable. Bagless days, of course, school students to have 10 bagless days in a year during which they will be exposed to a vocation of choice. That is also called informal internship. तो यहाँ पे 10 दिन without bag जहाँ वो अपना एक vocation सीखेंगे. For colleges, of course, there will be a common entrance test and 3 years से अब 4 years हो गया. अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो credit will be given and you can take a break and then continue with your degree. So no affiliation over next 15 years. Colleges will be given graded autonomy to give degrees. Affiliation with universities to end, so would the deemed university status. तो वो इंडिपेंडेंस उनको मिल जाएगी. एक फॉरेन या फी कैप प्रपोज किया गया है फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो ग्रोइंग global means top rated universities will be motivated, encouraged to come into India. तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ यूके की यहाँ पे आके they will be coming to India and establishing their universities here. So and also Indian universities will be motivated to go abroad. So that is the way. So that you can see just what are changes. You can just read the fresh focus किस पे है. इंटीग्रेटेड प्राइमरी स्कूल फ्रेमवर्क बनाया गया है. एक अच्छी चीज़ और भी की गई है कि राइट टू एजुकेशन अब क्लास 12 तक कर दिया है. पहले क्लास 8 तक था शायद, तो अब 12 तक कर दिया है. आंगनवाड़ी प्री स्कूल्स टू बी लिंक विद लोकल प्राइमरी स्कूल्स. फोकस ऑन प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग. वो रोट लर्निंग ख़त्म कर रहे हैं. और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा. अदर पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर. इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया जा रहा है विद इन एडिशन टू द मिड डे मील टू इंकरेज 100% एनरोलमेंट इन द स्कूल्स. और हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट टारगेट रहा है. Let us see students and teachers if implemented properly, because there have been many policies in India. The problem is that how we implement. I further doubt that in this we need a lot of training of teachers. I don't think Indian teachers at current situation में अगर देखें तो Indian teachers are not trained enough to handle this. It's a very good document, but on the ground I still feel the situation is not. Let us hope that government takes some concrete steps and work on one of the program which aims at training of teachers, because जब तक trainer train नहीं होगा तब तक ये implement ठीक से नहीं हो पाएगा. Coming back to your normal world news, guys, you all know coronavirus has affected the whole world and it is now clear. बच्चों देखो US इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है due to COVID-19. It is steepest fall since Great Depression. ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ है. The Commerce Department said that the GDP collapsed at a 32 point, so 1/3 से GDP को shrunk at 33% by more than 1.8 trillion dollars का नुकसान कहते हैं US को हुआ है. और कारण, of course, if you've done your chapter aggregate demand, aggregate supply, so you know that the reason is very weak demand, very weak consumer and business demand, which has brought down the supply क्योंकि वहाँ पे demand ही नहीं हो रही है, which has further affected the employment. Although spending by the government has increased, but spending by people and business have gone down. So a big shock for the whole world. And the richest country in the world, US,
affected the most. The number of Americans जो have उन्होंने claim किया है unemployment benefit, वो 10 लाख से ऊपर है. 19 स्ट्रेट वीक में 10 लाख से ऊपर अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट से ले रहे हैं, और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बहुत जोरों से नीचे गिरी है. कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, अगेन अ बैड न्यूज ड्यू टू कोविड एंड ऑयल फॉल इन ऑयल प्राइसेस. India is supposed to be number one country when it comes to remittances from abroad, पर कुछ क्वार्टर में पिछले साल से के मुकाबले 25%. Of course, fiscal year we are expected that we'll just receive somewhere between 55 to 60 billion dollars, whereas we were the same time previous year we were getting more than 80 billion dollars. Number one in the whole world. Remittances from abroad come to India. Here in our course we can just link it to our BOP account. Yes, our unilateral receipts में आती हैं remittances, और इसका कारण ये हुआ है कि ऑयल डिमांड कम होने की वजह से गल्फ रीजन में ऑयल प्राइसेस बहुत फॉल किए. ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्चुअली वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस फॉल किए, जिससे उनकी डिमांड कम होने की वजह से ऑयल प्राइसेस फॉल किए, जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत लॉस हुआ. तो उन्होंने या तो लोगों को निकाल दिया. इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज आर वर्किंग इन दीज गल्फ कंट्रीज, उनको बहुत लॉस हुआ और अब उन्होंने घर में पैसे भेजने कम कर दिए. सो मनी फ्रॉम अब्रॉड गल्फ रीजन ने मेन अफेक्ट किया है, और उसका कारण भी है कि ऑयल कंपनीज को जो नुकसान हुआ है वो उनके एम्प्लॉयज़ पे भी उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया है. सो क्रेडिट साइड बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा ड्यू टू दिस, एंड इंडियाज बीओपी अकाउंट में आप इसको रिलेट कर सकते हैं. कंटिन्यूइंग विद द प्राइवेटाइजेशन जो ड्राइव है गवर्नमेंट की. सो BPCL, योर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इज ऑफरिंग VRS स्कीम टू इट्स एम्प्लॉयज जो 45 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि now the government is planning to sell the entire 53% stake in BPCL. The company is strategically disinvested and privatized हो रही है company. And students, you have already done in your Indian economic development. What is privatization? Government का role कम करना. So very good, very huge company BPCL with more than 20,000 people working for it have offered voluntary retirement scheme for these people, because it is a known fact that the employees will not like privatization of a government company. So privatization, PSU का बेच देना private को, is you can relate to your syllabus. Some international news now. UAE has this is the first. UAE has now begin operation of Arab's first nuclear power plant with the cost of $22.4 billion. Of course, UAE के मिनिस्टर ने बताया कि this is historic milestone with a vision. Their vision, IAEA को बताया जाता है कि why are you using this atomic energy? So they say we are using it for peaceful purpose. That is, we are using it as clean energy. तो 25% UAE की एनर्जी जो नीड्स हैं वो इससे पूरी होंगी, and UAE's electricity generation of 25% will be through this plant, and this is the first plant in the Arab world which is based on nuclear energy. So a good achievement, good milestone for the Arab world. Now the latest stats, some latest figures. You can see the world's most valuable brands in 2020. Apple comes first with $241.2 billion. Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca-Cola, Disney, all first seven countries, US based. Then we have a South Korean coming into, that is Samsung with $50.4 billion, and then a French Louis Vuitton with 47.2, and again American. Out of 10, we have 8 American companies on the top with most valuable brands in 2020. This was a very good news which I wanted to share with all my teachers and students. Russia plans to start the mass vaccination against COVID-19 in October. They'll be giving it to the public now. They'll start with health workers and teachers. So a lot of importance is given to teachers in the world, students. I hope कहीं इंडिया में भी teachers को उतनी importance दी जाए जितनी world में दी जाती है. They are the future maker. They make the future of the nation.
So teachers are so important. Russians can feel that the teachers are so important that the first vaccine should be given to health workers and teachers. So uh, hopefully India also realizes the value of its teachers. यहाँ पे तो ये हाल है कि टीचर्स को सैलरीज ही नहीं दी जा रही हैं. सैड सैड सिचुएशन इन इंडिया, बट आई होप समथिंग हैपन्स एंड टीचर्स ऑल्सो गेट देयर ड्यू व्हाट दे आर, जो डिजर्व करते हैं वो. Yeah, I always say, students, download our EcoVisioner app. I hope you like the way I presented this news today. Download our EcoVisioner app for more videos like this, and also go for our free online test. We have a lot of material for class 12th, multiple subjects available on the app. Go and practice free test there. Go and have the study material. CBSE sample papers are uploaded on the app. Also like and subscribe our YouTube channel, students. Take care of your health. If there is any query for from our side, if you want any query or any information from our side, you can mail us at ecovisioner@gmail.com, or you can also call us or WhatsApp us on 9891203546. Thank you. Stay blessed.